हेलो स्टूडेंट। आई होप दैट आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। हमने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स का जो लेक्चर सीरीज है वो स्टार्ट किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लास 12 का जो भी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो भी क्वेश्चन बनता है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे बनता है। तो आपको जितना थ्योरी आपका अच्छे से स्ट्रांग रहेगा तभी आप न्यूमेरिकल और एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माय नेम इज मनोहर पाटिल। लेट्स वी स्टार्ट टुडे लेक्चर। So now the first law of thermodynamics बहुत simple है। We already complete what is by thermodynamics. Thermodynamics मतलब that is the study of heat and work done and interconversation between the different form of energy. After that we complete the types of the system. There are the open system, closed system and isolated system. So in this lecture we have to study about the first law of thermodynamics. बहुत basic law है। आपको बस सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो एग्जाम्पल समझ में आ गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो भी कंसेप्ट है आप उसको अच्छे से याद कर पाओगे। लेट्स वी स्टार्ट। वी टेक द सिलेंडर। दिस इज द सिलेंडर। इनसाइड देयर इज द गैस। हमने गैस से इसको फिल कर लिया। ओके, नेक्स्ट। We consider that now this is the gas burner. We apply here, that is the heat we supply. This is the gas burner and now we supply the heat. बहुत सिंपल कंसेप्ट है। व्हाट हैपन, अगर हम अगर अच्छे से उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या होगा, वी एडेड द हीट। हमने ऐड किया क्यू अमाउंट ऑफ हीट को हमने ऐड कर दिया। वी ऐड क्यू अमाउंट ऑफ हीट। इससे क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स जो भी है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। दोज गैस मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर। व्हाट हैपन, जो भी हीट रहेगा वो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाउ हियर द गैस जो भी वो क्या है, हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम। और आपको पता है व्हाट इज इन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम बहुत सिंपल है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी उसका टेंडेंसी है हीट को देना और हीट को लेना, दैट वी कॉल द थर्मोडायनामिक सिस्टम। हीट को देना और लेना मींस दैट इज हीट एडेड or heat rejected. Very simple. Now here we take the basic example. Now there is a gas burner. Heat is supplied to the cylinder. What happen inside there is a gas molecule. What happen whenever heat supplied to the cylinder, then the gas molecules absorb that amount of heat. After absorption of that amount of heat, what happen? The temperature of gas molecules is increases. The temperature of gas is increases. And remember that internal energy ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी is the function of temperature. It is denoted by letter U. तो इंटरनल एनर्जी क्या है, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी मींस बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ऑल द एटम्स जो भी रहेगा उसका जो भी एनर्जी रहेगा कंप्लीटली दैट्स कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो भी वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। इफ, ये आपको अच्छे से याद रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा, व्हेन वी सप्लाई द हीट, व्हेन वी सप्लाई Q1 अमाउंट ऑफ हीट। जब भी हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे, व्हेन वी एडेड द Q1 अमाउंट ऑफ हीट, इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो भी है गैस का वो बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीजेस, अभी या तो क्लोज सिलेंडर है लेकिन आपको याद रखना है अगर टेम्परेचर ऑफ द गैस बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इफ द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, सो व्हाट हैपन, वी कैन से दैट वर्क डन भी बढ़ेगा। तो एक केस में क्या होगा, वर्क इज डन बाय द गैस। और सिंपल, अगर हमने क्या किया, अगर इसको हीट को ऑफ कर दिया, आफ्टर ऑफ
आफ्टर गैस बर्नर को बंद कर दिया, और नाउ व्हाट हैपन इन दैट केस, हीट तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी ऑल्सो बढ़ेगा, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो व्हाट हैपन इन दैट केस, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। ये जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। वर्क डन बाय द गैस क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मॉलिक्यूल्स का, सो डेफिनेटली उसका जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा सो व्हाट हैपन, वर्क डन आल्सो ज्यादा होगा, दैट इज वर्क डन इंक्रीज होगा। सो नाउ दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको बस याद रखना है तीन स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, अगर Q1 amount of heat is added to the system, मतलब गैस का हमने एग्जांपल लिया है, the Q1 amount of heat is added to the system, now the internal energy also increases, और वो केस में क्या होगा, work is done by the system on the surrounding। So tell me what is the statement, so we can write down the statement of first law of thermodynamics। statement बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, if, or we can write down very simple, that is the statement is the Q1 amount of heat is added to the system, Q1 amount of heat is added to the system by the surrounding is equal to, बहुत सिंपल है, is equal to the sum of increase in internal energy of the system, increase in internal energy of the system, and work done and work done by the system, work done by the system on the surrounding। So in such way that we complete the statement of फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, हमने ऑलरेडी वो एग्जांपल देखा, एग्जांपल में क्या किया हमने, वी सप्लाई द हीट टू द गैस, गैस को जब भी हम हीट सप्लाई करेंगे, दैट इज हाउ मच, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस, मतलब एडेड टू द गैस, और वी कैन से दैट गैस इज द system in that case। So very simple statement, the Q1 amount of heat is added to the system by the surrounding is equal to the sum of इंक्रीज इन इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी गैस मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो केस में क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड आई नो दैट, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सो केस में क्या होगा, वर्क डन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा। सो इन सच वे दैट वी कैन राइट डाउन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको ये याद रखना है, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। So what is meant by delta Q? Delta Q means that is the Q1 amount of heat is added to the system। अच्छे से लिखना है उसको। What is meant by delta Q? Delta Q means that is delta Q, then delta W, then delta U। What is meant by delta Q? Delta Q बहुत simple है, the amount of heat added to the system, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, जो आपको नीट जेई सही के लिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इट इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। सो हीट जो भी है वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, इसका मीनिंग क्या होगा,
हीट जो भी हो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट. नेक्स्ट, वर्क डन, दैट इज द वर्क डन by the system on the surrounding. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है फॉर वर्क डन ऑल्सो. सो दैट इज वर्क डन इज ऑल्सो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना है. वर्क डन इज द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन. एंड लास्ट वन, दैट इज इंटरनल एनर्जी, मीन्स increase in internal energy of the system. और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इंटरनल एनर्जी का स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज इट इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मतलब इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी इज नॉट पाथ फंक्शन, सो देयरफॉर इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको अच्छे से याद रखना है. सो इन सच वे दैट वी कंप्लीट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. द Q1 अमाउंट ऑफ हीट को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितना रहेगा, वो एग्जैक्टली इक्वल टू रहेगा द सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. आफ्टर दैट वी राइट डाउन द ऑल नोटेशन. वो सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन. सो व्हाट इज द साइन कन्वेंशन. सो हम अभी वही साइन कन्वेंशन देखेंगे, बहुत सिंपल है. सो बहुत इजी आपको याद रखने. देयर आर द 6 साइन कन्वेंशन. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट फॉर द हीट, second one for the work done, and last one for the internal energy. So बहुत सिंपल है. क्या अगर हीट को हम ऐड करेंगे, when the heat is added to the system, तो आपको याद रखना है डेल्टा Q is greater than, that is 0, that is it is positive. तो डेल्टा Q क्या रहेगा उस केस में, पॉजिटिव रहेगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम हीट को ऐड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव. कौन से केस में इंटरनल एनर्जी 0 रहेगा, व्हेनेवर द हीट इज एडेड टू द सिस्टम, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा. मतलब इसको बहुत ही इजी, इसको आसान इजीली आपको कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल है. सो दैट इज इफ, मैं अच्छे से पूरा लिख देता हूँ आपको, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. तो क्या होगा फिर, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0 रहेगा. तो इसका मीनिंग रहेगा इंटरनल एनर्जी जो भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा. उसका उल्टा, अगर इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इसका मीनिंग क्या होगा, डेल्टा U इज लेस देन 0, दैट इज नाउ इट बिकम्स नेगेटिव. सो दीज आर द 2 important observation regarding the internal energy. So first important observation regarding the heat, when heat is added to the system, अगर हम heat को add करेंगे system में तो delta Q जो रहेगा greater than 0 रहेगा, that is positive. Second one, if heat is rejected or removed, if heat is rejected or removed by the system, so केस में क्या रहेगा, delta Q जो भी रहेगा less than 0 रहेगा, that is उसका आंसर आएगा नेगेटिव. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द हीट. तो लास्ट टाइम वर्क डन. वर्क डन बहुत सिंपल है. वर्क डन को कैसे याद रखना है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, so then what happen, work done, and most importantly work is done by the system. अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम. सो क्या होगा इस केस में, जो भी वर्क डन रहेगा आपका, वर्क डन इज ग्रेटर देन 0, दैट इज नाउ इट इज पॉजिटिव. नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस. वॉल्यूम इंक्रीजेस मीन्स सिंपली एक वर्ड याद रखना है, एक्सपांशन ऑफ द गैस, मतलब सिस्टम का एक्सपांशन हुआ. वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब आपको अच्छे से याद रखना है, कंप्रेशन. These are the 2 words, they can help you to understood the sign convention for work done.
if volume decreases, so that is work done ऑन द सिस्टम, ये अच्छे से याद रखना है, बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन क्या रहेगा वो केस में लेस देन जीरो, दैट इज it becomes negative. So in such way that you have to remember the 6 sign convention. So remember, for the 2 sign convention for heat, what are the 2 sign convention for heat? Whenever the heat is added to the system, heat greater than रहेगा मतलब पॉजिटिव रहेगा, whenever heat is rejected by the system तो हीट जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। whenever the work is done by the system, work is done by the system पॉजिटिव, और work is done on the system नेगेटिव रहेगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस मतलब एक्सपांशन, वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब कंप्रेशन है। नेक्स्ट वन, whenever the temperature of the gases or the system increases, इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी लेस रहेगा, दैट इज नेगेटिव रहेगा। सो इन सच वे दैट वी कंप्लीट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छे से इसको लिख लेना है और रिपीट प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रीड करना है। सो बहुत सिंपल है, हमने बहुत ईजी क्वेश्चन लिया। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ईजी था। क्या क्या, गैस को हीट करेंगे, अगर हीट सप्लाई करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। आफ्टर दैट ये अच्छे से स्टेटमेंट को राइट डाउन करके वो रिमेंबर, राइट डाउन द ऑल नोटेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हीट और वर्क डन बोथ आर द पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, मतलब दोनों मतलब बोथ दोनों जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। कौन डिपेंड्स ऑन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, दैट इज इंटरनल एनर्जी। सो इन सच वे दैट वी कंप्लीट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट तो जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।